अच्छा, मैं आपको सेम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह ऐड कर दिए, ठीक है। स्टैक और फ्लो ऐड कर दिया, स्काइप का लिंक शेयर किया, लिंक्डइन की प्रोफाइल का शेयर किया। यहाँ पे आपने छोटा सा ये लिख देना, मैं ये यूँ ऐसी प्रॉब्लम आपने लगा देना। फिर उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस आ गई, ये तीन आपकी कंपनीज आ गई, आपकी स्किल्स आ गई, प्रोजेक्ट्स आ गए, एजुकेशन आ गई, बस। ठीक है। बाकी आप ये देखो, नोवा रिज्यूमे वगैरह जाते हैं तो यहाँ पे स्किल्स है, प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। और बस ये दो चीज़ें। अचीवमेंट्स में कुछ भी लिखी, तो जब तक आपकी ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता तब आपका ये सारी चीज़ें आउटपुट दो, ठीक है। और लैंग्वेजेस में नहीं आपने कुछ नहीं लिखा, लैंग्वेज कॉमन ही होती हैं, सबको पता होता है। अचीवमेंट में अचीवमेंट भी ठीक है। देखो अचीवमेंट में क्या लिखा हुआ है, मैंने अचीवमेंट कुछ नहीं लिखी हुई, मिनिमल रखना है आपको। ये अचीवमेंट भी उड़ा देते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट करने की ऑप्शन होती है, ये डिलीट हमने कर दिया। लैंग्वेज वाले को भी डिलीट कर देते हैं और इंटरेस्ट वाले को भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास ये चार चीज़ें आएंगी, दो चीज़ें इधर आएंगी, दो चीज़ें इधर आएंगी, जैसे यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे दो चीज़ें, ठीक है। और इसकी ये यहाँ पे आपको अपनी कोई प्यारी सी तस्वीर लगा दें, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना कुछ भी लिख दें, ठीक है। मैं ये हूँ, ठीक है। IMP का बॉस लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है। और ये आपका एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है। तो जैसा ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है ना, यानी कि सेम यहाँ पे अगर मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस आ गया। फिर आप जैसे जैसे यहाँ पे स्किल्स ऐड करोगे ना, यहाँ पे स्किल्स ऐड करने की और भी ऑप्शन होगी, है इस तरह इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जावा लिख देना, ठीक है। फिर आपने इसी तरह नेक्स्ट के लिए टाइप स्क्रिप्ट लिख देनी है, टाइप स्क्रिप्ट अगर आपका होती है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट आ गई, कोई अगर टाइप स्क्रिप्ट की स्पेलिंग का, हाँ ठीक है। ये टाइप स्क्रिप्ट आ गई। फिर इसी तरह आपने प्रोजेक्ट्स का नेम लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं। और कोशिश करो कि प्रोजेक्ट्स का जो आप नाम दे रहे हैं ना उसके साथ ना हाइपर लिंक हो, ठीक है। तो वो हाइपर लिंक भी ओपन हो जाए। ये मैंने ऐप पे काम किया हुआ था, ऐप से जीरो से बनाई थी, ठीक है। तो उसके वो प्ले स्टोर का लिंक आ गया, ठीक है। तो इस तरह प्ले स्टोर का लिंक आ गया। फिर उसके अलावा क्या कहते हैं, ये देखो मैंने किस तरह बताई है, ये देखो ये बैग पे, ठीक है। मैंने नाम लिखा है और उसको पूरी को मैंने हाइपर लिंक बना दिया। तो ये कैसे करेंगे, ये इस तरह करेंगे। मैंने ये कॉपी किया, ठीक है। और फिर इधर बैक आए, इधर मैंने फिर दोबारा इसको कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने हाइपर लिंक लगाना है। वो किस तरह करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि इसके ऊपर ऐसे जाएंगे और अटैच पे जाएंगे, नहीं इसको डिलीट करते हैं। इसके ऊपर मैंने किस तरह लगाया था, ये क्या बटन करता है, हाँ इसको आपने इस तरह सेलेक्ट करना है और ये ऊपर यू का बटन लगा हुआ है। और इस पे जाके आपने ये हाइपरलिंक पकड़ा, कॉपी किया और यहाँ पे गए पेज कर दिया और सेव कर दिया। और इसको डाउनलोड करते हैं, ये देखो हाइपरलिंक बन गया, ठीक है। तो ये हाइपरलिंक बन गया। इस तरह आप अपने प्रोडक्ट्स के हाइपरलिंक लगा देने, ठीक है। अब इसको हम आप कहेंगे यार ये हम अपनी एजुकेशन किस तरह ऐड करें, तो एजुकेशन भाई कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे गए एजुकेशन में गए, बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लगा दिया, इसको भी कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स किए हैं तो उनको यहाँ पे लगा देना आपने, यार यहाँ पे आपने इसको लगा दें, गिटअप का एक लिंक लगा दें, यहाँ पे एंड्रॉइड का लगा दिया, मैंने रिएक्ट का भी काम किया हो तो वो भी लगा दिया, साथ में अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का भी हाइपर लिंक लगा दिया, ठीक है। तो ये सारे हाइपर लिंक लग गए। फिर इस तरह मैंने, ये तो हाइपर लिंक लग गए, ठीक है। अब आप कहेंगे यार ये लाइन कैसे आएगी, ठीक है। तो लाइन लगा के आपको दिखा देते हैं। ये एक मैंने कंपनी में काम किया, ठीक है, उसको मैंने XYZ कर दिया, ये कंपनी का नेम था, ये यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह आ गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक और कंपनी का ऐड करूँ, मैं एक और कंपनी ऐड कर दी, उसका एक नाम आ गया, उसकी एक वर्क प्लेस की कंपनी का नेम आ गया, ठीक है। फिर मैंने एक और ये लाइन बन गया आपके साथ, ये वार्निंग देता रहता, आपको बताता रहता भैया भैया दिस इज द इशू, ठीक है। My I was using very rough language, so if you feel any comfortable, um,
on listening my language, so I'm switching to an English language so that other user also understand. And I'm also good English speaker, so this looks so good. Why it's not looking good? So there are some. That's my pretty university. It's very competitive university. I have 6 to 7 campuses. So I have rated study in Lahore. Beautiful garden. And wow, that is new features. Basically, this website is developed in .NET, and .NET is a very old technology, but that is was developed in 2005 and 6, and they are maintaining the website from onward, so they're not upgraded to React.js, but it looks good, very working very fine. And machine learning, what is that? Machine learning Python. Wow, what is that? Short courses. Oh, that's just time waste. And faculty stuff. So move on to our. That's a very professional big picture with white background and white shirt. And I captured that image when I was doing 18 hours work. So my eyes very dark. And now move on to this closing all the rough stuff. This is some React project. Very handy, good boy. And so skills now skills are added, education have been added. If you want to add some BSc software engineering, some now I want to add some college education, so this is the college education, and this is this Punjab College. Grammar school. So we are doing some progress, and now how to add another click here, control V, and that's another project. So this is all about my resume, and don't add more those things. So this is all about and how to do those things. And keep in mind that the company name should be a valid, like Android developer. So here this is your title, Android developer. So I'm a very lazy person and not trusted in writing. So here the company name, like Diligence. P-L-I-G-E-N-C-E. I am typing in my dark room, so I can't see my keyboard. That was typing miss. Salmon solution. I work in 4 software companies in 2 years. That's very awesome. So how I can add 2 more.
same copy and like this, or maybe you understand how this will be. So you can also add many things, blah 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 blah. So it's very looks like this, and also you can change the background from the layout, and don't go to also you can also download this. So what the hell are you using? Oh, I'm using paid now. Yes, sorry, that was my mistake. So you can download. That's also good. So that is very basic things. You need to follow these like add date, add achievements, and what you have done, and these are the date, starting and ending date, achievements, and the description, and it's all about those things. So don't call me on this number, and I will block you. Okay, thank you. So you can also add skills and like this manners. Too many many small will be not a good option. That would looks good. So always print in uh, white and blacks, white and black print, not in print color. So it's also save your money because you are sharing too much resume with many person. So don't come in any company with your printed resume. Say to company that I have that resume printed from your printer, because those companies have printers. So that's all about. Thank you for listening, and if you have any question you can comment on that video. I am sharing this that inspire me that someone is getting help from my learning and my experience. So I really encourage you boys to ask questions, because if you ask question it will be very helpful to you to learn more, and always keep learning and keep questioning, because someone also helped me in making those things. So that's why I'm back with to help other person, random person or anonymous persons that I don't know, but it's I feel responsibility to share that content. So okay, thank you, goodbye. When I was unemployed, someone helped me to make this resume like that. Okay, it takes me around 2 days to manage URLs, content, text, because too many things are mentioned, and the alignments and to. So maybe it's much time it's taken, because sorting out all the projects, finding URLs and attaching those is too much time consuming and energy consuming. Like this thing is also very time changing. Goodbye.